I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is hardware and software. So let's begin with this lesson. Computer system is merely a combination of two components. सबसे ज़्यादा दो mainly combination किसका होता है? दो components का होता है, that is hardware and software. So both complements each other to solve users' problem. We will discuss these two components to understand their importance and cover the uses of some essential hardware software required for the working of computer system. ये क्या करती है? दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दो यूजर को कंप्यूटर वर्क करता है यूजर्स के तो सॉल्व करने के लिए यूजर की प्रॉब्लम को. Now, what are hardwares? The thing that we can touch of the computers. The word hardware means all of the hard parts of computer. ये सारे hard parts होते हैं कंप्यूटर के, like the screen, button, keyboards, all the bits and pieces inside a phone or laptop or desktop computer. So the parts of computer that can be touched are called hardware. जो parts होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम touch कर सकते हैं उनको हम hardware कहते हैं. They may be present outside or inside the computer. या outside भी present होता है, कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं. These parts are inside the CPU box. वहाँ पे होता है ये सब CPU box के अंदर होते हैं. So like hard disk, motherboard and CPU chips. ये किसके अंदर होती है? CPU के अंदर होती है. Keyboard, speaker, motherboard, hard disk, CPU. These all are the hardwares. Some of the commonly used hardware components are keyboard. So, a keyboard is the most common hardware component of a computer. It was a common hardware component of my computer. Keyboard is the most common input device of a computer system. A common input device है हमारे computer system का. The keyboard resembles a typewriter. Keyboard में क्या होता है? Typewriter की तरह लगता है keyboard. Modern keyboards have more than just the letter and numeric keyboard. It usually has 104 keys on it. Modern keyboard पे कितनी होती है? 104 keys होती है. Now let's talk about speaker. Speaker is also the hardware part. This is another output device which is connected with the computer system to give us the sound output from the keyboard. ये एक और output devices है जो किससे connected होता है? Keyboard हमारे computer system से connected होता है जिससे हमें output sound मिलती है. So next is mouse. Mouse is another commonly used input device of a computer system. The mouse is a pointing device that moves the cursor on the screen. ये हमारा क्या होता है? Pointing device होता है जो हमारे cursor को screen पे move करता है. You can place the cursor on icon and by clicking you can launch a program. इसको click करके आप program को launch कर सकते हो. A typical mouse has two buttons. एक typical mouse में क्या होता है? दो buttons होते हैं, एक scroll wheel होता है. The left and the right clicking buttons and a wheel in the center of scrolling. For scrolling, user can perform many operations. इससे जो users होते हैं बहुत से operations perform कर सकते हैं. So a mouse like selecting or arranging a different programs icons on the desktop. इससे क्या है? उसको आप select कर सकते हो, arrange कर सकते हो, open कर सकते हो different icons अपने desktop. Now let's talk about scanner. Scanner is the most important input device of a computer system. Important input device है आपके computer system का. A scanner converts printed documents into the images. ये आपके printed documents को images में convert करता है. Some types of scanners can scan documents and produce the results in black and white images. कुछ types के scanners को तो scan कर सकते हैं आपके documents को produce better results आपके black and white images में. Now let's talk about monitor. Monitor is the most common output device of a computer system. ये common output device है आपके computer system का. The monitor is the display screen of a computer. Monitor क्या होता है? Display screen होता है आपके computer का, जो भी आप activities को form करते हो सब monitor पे show हो जाती है. Cathode rays tube, that is CRT, and liquid crystal display, that is LCD, are the two types of monitor. ये दो types के monitor होते हैं, CRT monitor and LCD monitor. Nowadays LCD and LED monitors are trending. Now let's talk about printer. A printer takes print commands from a computer and print out text images on a paper. Printer क्या करता है? Commands लेता है आपके computer से, print करता है आपके text को, images को एक paper पे. Different types of printers are available for various purposes. Different types of printers available होते हैं various purposes के लिए. A printer for office use must be heavy duty and fast wipe for photographs. It must produce high quality prints. ये क्या करता है? High quality prints को produce करता है. Dot matrix, inkjet, laser jet are the different types of printers. ये आपके different types के printers होते हैं.
dot matrix, inkjet printer, laser printer. Now let's talk about CPU, the brain of the computer. CPU box is the main unit of a computer system. ये main unit होती है आपके computer system की, to which all other hardware components are connected. इससे सारे आपके hardware components connected होते हैं through a main electronic board called motherboard. एक main electronic board होता है हमारा motherboard, उससे सब चीजें connected होती हैं. Some other hardware components which are inside the CPU box are hard disk, CD, DVD drive, CPU chip, memory chip, and power supply, etc. So all these physical components of computer system are known as hardware. जो सारे physical components होते हैं हमारे computer system के, इसको हम hardware कहते हैं. Now let's talk about CD. CD stands for compact disk. It is a circular in shape and can store lot of data. ये circular होती है आपकी shape में और उस पर बहुत सारा data store होता है. Now let's talk about software. ये programming language होती है. The word software means all of the things that the computer do. जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर कर सकता है, like games and program that run and make the computer work, जिससे कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है. Software is a set of instructions. ये set of instructions होता है that perform a specific task on a computer. Specific task perform करता है आपके कंप्यूटर पे, कंप्यूटर सिस्टम पे. दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम के अंदर होता है. एप्लीकेशन जो होते हैं जो थर्ड पार्टी जो आप इंस्टॉल करते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट मैनेजेस द कंट्रोल एंड कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग. मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ओवरऑल फंक्शनिंग वो कंप्यूटर सिस्टम. विदाउट इट अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क. इस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता. सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है. Operating system is essential system software. Some examples of operating system are Windows 7, Windows 8 and Windows 10. ये आपके operating systems होते हैं. Now let's talk about application software. We can perform specific tasks or application on a computer. हम specific tasks और application perform कर सकते हैं कंप्यूटर पे use करिए application software को. Some common application software are as follows: MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. ये आपके सारे common application softwares हैं. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.